लभन्ते एतं एतं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना तथागतं काम काम लभन्ते. Yes, somebody, anyone of you wants to recite the sloka, you can recite, or we can just go ahead. So, there's no one to recite, then we can go ahead with translation. I'll recite, Prabhuji. Yes. ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम लभन्ते. Anyone else? Prabhuji, I will recite. Yes. Hello. Hare Ah. Hare Krishna, Prabhuji, I will recite. Am I audible? Yes. Yes, it's audible. Yeah. तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते. Anyone else wish to recite? Okay, maybe we can read a translation purpose. Oh, should I read, Prabhuji, or somebody is going to read? No, Prabhuji, somebody will read. Okay. I'll read, Prabhuji. Yes, yes. Translation. When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of three Vedas achieve only repeated birth and death. Purport. Okay. One who is promoted to the higher planetary systems enjoys a longer duration of life and better facilities for sense enjoyment. Yet one is not allowed to stay there forever. One is again sent back to this earth upon finishing the resultant fruits of pious activities. He who has not attained perfection of knowledge is indicated as in the Vedanta Sutra, Janmadi Asya Yatha, or in other words, he who fails to understand Krishna, the cause of all causes, becomes baffled about achieving the ultimate goal of life and is thus subjected to the routine of being promoted to the higher planets and then again coming down, as if situated on the Ferris wheel, which sometimes goes up and sometimes comes down. The purport is that instead of being elevated to the spiritual world, from which there is no longer any possibility of coming down, one simply revolves in the cycle of birth and death. Prabhuji, can you scroll? I can't read below this. Okay. Comes then again coming down as if Ferris wheel, which sometimes मैं नहीं सुनता हूँ चला रहा तो मैं उठ गया. the purpose is that instead of being elevated to the spiritual world from which there is no longer any possibility of coming down, one simply revolves in the cycle of birth and death. On higher and lower planetary systems, one should better take to the spiritual world to enjoy an eternal life full of bliss and knowledge and never return to this miserable material existence.
Prabhuji, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Bro, I'm audible na clearly? Yes, Prabhuji, you're audible. yes, Prabhuji. So the ninth chapter is the title of the chapter is the most confidential knowledge. So if you read the, अगर हम इसका एक एक श्लोक का अगर अर्थ पढ़ेंगे तो इट्स क्लियर, जो कृष्ण वो खुद का व्यक्तित्व को, खुद का पर्सनालिटी को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और देखिए, जब भी हम ये दुनिया में अगर हमको कोई पूछे अब कृष्ण का भक्त है, कृष्ण कौन होता है करके अगर हमको कोई पूछे, हम क्या बोलेंगे? बोलेगा हाँ कृष्ण हमको मालूम है, कृष्ण कौन होता है, वृंदावन में रहते हैं और कुरुक्षेत्र में युद्ध में मुख्य भाग लिया, मुख ने तो इम्पोर्टेंट पार्ट लिया, ऐसा हम इंट्रोडक्शन देंगे ना कृष्ण को। लेकिन जब कृष्ण खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वो भी शुरुआत में है, अभी देखिए ये चैप्टर के सेकंड श्लोक में, हाउ कृष्ण इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, और इनफैक्ट इज टेलिंग व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट मी टू यू, रेफरिंग टू अर्जुन, बिकॉज यू आर माई, यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी एंड यू आर ग्रेट डिवोटी ऑफ मी एंड यू आर फ्रेंड ऑफ मी। मतलब भगवान जब अर्जुन को खुद का बारे में ज्ञान दे रहे हैं, उसको देखिए एक एक श्लोक, अगर ये श्लोक नंबर 3 से 8 तक अगर कृष्ण का खुद, भगवान खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, बोलते कि मेरा शक्ति के हिसाब से पूरा दुनिया चलता है, ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। So if you see how Krishna is introducing himself from text number 3 to text number 8, is that how he is the one who is the source of entire creation, because of his prowess only everything is done. अभी किसी को लगता होगा अच्छा भगवान, लेकिन 9th श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं लेकिन आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, मीन्स दैट इज हैपनिंग टू मी। जैसे अभी देखिए ये दुनिया में हमको, हमारा जीवन में कैसे होते हैं, जो काम हम करते हैं वो काम का फल हमको ही मिलेगा, दैट इज द नेचर, दैट इज, ये जो निसर्ग का इतना कठोर नियम है। क्या है नियम? जो फल, जो काम हम करते हैं उसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा। जैसे हम अभी ऑफकोर्स ये तो मुंबई में बहुत सारे लोग को ये खाना का टाइम नहीं है ना, 12 से 1 बजे तक। तो till how long we go for class, Lijapur? Class generally goes till how long? It's 1 hour, Prabhuji. Okay. So generally when we have class, 12 to 1, it's expected that mostly after 1 o'clock, most of you will go for your lunch, correct? Or in case in the Mumbai context, it may be even 1:30 to 3, whatever. See, when we take our lunch and then let us say you're in a hurry, or let us say we got a certain specific item which is our favorite, and then we are like, say sometimes it happens na, like item which is we like the most, so when it comes in our plate we tend to take it very hurry, as if it's going to get over or something. Now what happens in the course of time, कभी कभी हमारा दोनों को दांत के बीच में हमारा जो चीक का पीछे वाला भाग है ना, वो फंस जाता है। उस समय क्या होता है, थोड़ा क्रशिंग होके थोड़ा खून निकलता है। अभी मान लीजिए, अभी खाए कौन? हम। घबरा घबरा से कौन खाए? हम ही खाए। अभी हम घर घर में जो कुकिंग करते हैं, जो मेड होता है, नहीं तो किसी का घर का स्त्री होता है, नहीं तो कोई होटल का शेफ होता है, शेफ का हम बोल सकते हैं अब क्यों ऐसे खाना बनाए कि हम, आपकी वजह से हमको ऐसे खून निकाला। हम शेफ को बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते?
क्योंकि वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एक्टिविटीज इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो नियम किसके लिए? हमारे। whereas for Krishna, he is not affected with the reactions of any activity, though he is the cause of all the activities and he is the doer. स्पेशली जो काम और जो एक्टिविटीज यहाँ पे चलता है ये दुनिया में, उसका जिम्मेदारी कृष्ण का नहीं होता है। भले कृष्ण का वजह से, कृष्ण का शक्ति से सब चीज चल रहा है, लेकिन उसका जिम्मेदारी कृष्ण का नहीं। और उसका जो प्रतिचर्या होता है ना, रिएक्शन डजंट गो टू कृष्ण। रीजन इज व्हाट? बिकॉज दो he is he is the cause of the activity, is not responsible because of the living entity desires. हर जीव का उनका मन में अलग अलग इच्छा, स्व इच्छा से एक काम, एक दुनिया का काम चलता है। इसलिए उसका जो जिम्मेदारी बनता है किसका वजह, किसको? वो इंडिविजुअल व्यक्ति को। जैसे हम कोई होटल में जाए, होटल में जाएंगे तो हम ऑर्डर करेंगे, पानी पूरी दो, नहीं तो तंदूरी दो, जो भी तंदूरी नॉन नॉन। तो अभी हम ऑर्डर करेंगे। सी बनाने वाले कौन है? वो होटल का स्टाफ है, लेकिन वो लोग किस लिए बन रहे हैं? हम ऑर्डर कर रहे हैं इसलिए बन रहे हैं ना। तो इसलिए बिल हमको आते हैं और उसके बाद ऑफकोर्स खाने का आइटम हमको मिलता है। सो द पॉइंट इज दैट इवन दो इट इज थ्रू कृष्णा ओनली डिफरेंट एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस इन दिस वर्ल्ड, इट इज हैपनिंग बाय कृष्णास एनर्जी। कृष्ण का शक्ति का वजह से सब चीज हो रहा है, लेकिन वो काम का जो जिम्मेदारी, जो काम का जो प्रतिचर्या होता है, वो हमको। So okay, because of our desires only those activities are happening. Okay. So now 9th श्लोक में एकदम कृष्ण बोलते हैं कि अरे देखिए 9th श्लोक का एकदम ट्रांसलेशन अगर हम पढ़ेंगे, ओ धनंजय, all this cannot bind me. I am ever detached from all these mental activities, seated as through neutral. मतलब मैं तटस्थ हूँ, ये काम हो रहा है मेरा वजह से हो रहा है, लेकिन आई एम न्यूट्रल। एंड देन कृष्णा फर्दर उनका बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। नाउ फाइन, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, come to 17th 18th श्लोकास, कृष्णा ऑलमोस्ट टेल्स दैट आई एम एवरीथिंग। जो भी ये विश्व में चल रहा है उन सबका जो मेन कारण है, मेन बेस है। नाउ कृष्ण यहाँ पे खुद की इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं दे रहे कि मैं वृंदावन में और I am the beloved of Srimati Radharani or the gopis, or he's not saying that I am the husband of 16,100 queens. He's not saying that, because see why what happens. It is important. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. I think it got cut in between. You are able to hear me now? Yes, Prabhuji. Yes. Well, switch off the video. So then Krishna is telling, now somebody may say, acha, everything. Then Krishna is telling one important sloka, just 2-3 slokas before 21st. What Krishna is telling, everyone actually worshipping me, anybody who is having अभी अलग अलग बात है, कोई डायरेक्ट भक्ति का मार्ग में आता है, कोई ज्ञान का मार्ग लेता है, कोई योग का मार्ग लेता है। सो अलग अलग, और कुछ लोग हैं ये सब के काम नहीं। अगर हम देखते थे आज के जमाने में बहुत लोगों का प्रकृति का प्रति बहुत प्रेम है। प्रकृति मतलब बोलते हैं कि अरे हमारा
नदियों को बचाना है, और हमारा अलग अलग माउंटेन्स है उसको बचाना है, अलग अलग तरीका कुछ प्रमो नो इवन of course it may not be direct, of course we should respect, and then that is a good feeling also, there's nothing wrong. Someone is sensitive towards environment, that's also good, because ultimately ये environment भी क्या है, भगवान का शक्ति है. It's not different from कृष्ण, इट इज कृष्णा's एनर्जी ओनली. अगर कोई ये भौतिक दुनिया को कृष्ण के एंगल से देख पा रहे हैं वो भी अच्छा है. इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज नीड टू बी कंडेम्ड और एनीथिंग, बट नेवर directly worshipping Krishna through devotional service is the highest, and that is what is precisely the conclusion of this chapter. अभी देखिए भगवान कृष्ण बोल रहे ठीक है, एवरीथिंग इज मी, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. अगर कोई सोचेगा ठीक है, अगर जो जो भी मैं करता हूँ वो सब ठीक है क्या, नहीं है. उसका जो वो कंटेक्स्ट में जो करंट श्लोक आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि क्षीणे पुण्य मध्य लोकम विशंति. नो नो, अगर कोई स्वर्ग जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी धार्मिक रूप से देखेंगे तो वो भी अच्छा लक्ष्य है, लेकिन वो हाईएस्ट लक्ष्य नहीं. क्योंकि एक चीज है कि मोक्ष का मार्ग है नो, इसलिए आपको सुना होगा ये दोनों टर्म्स, पवर्ग अपवर्ग. पवर्ग मतलब स्वर्ग जाना, और हमारा जो इकोनॉमिक सिचुएशन को, नहीं तो हमारा जो भौतिक मेटीरियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हम कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं पवर्ग. पवर्ग. अपवर्ग मतलब पवर्ग को ऑपोजिट. अपवर्ग मतलब जो ये भौतिक चीजों को थोड़ा दूर दूर रखें, हम खाली मोक्ष का प्रति और कृष्ण का प्रति पूरा भक्ति से हम लगाव रखें. मीन्स कंप्लीटली फोकसिंग ऑन ट्रांसेंडेंस is the path of apavarga. Now the thing is that what is a typical issue with the going to the heavens? हेवन अच्छा ऐसा कुछ गलत जगह है क्या? नहीं, हेवन गलत जगह नहीं है, लेकिन हेवन मीन गोइंग टू हेवनली प्लैनेट्स इज नॉट गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स परमानेंटली. जस्ट लाइक आप लोग कोई नो फिजिक्स केमिस्ट्री बचपन में पढ़ा होगा ना, 11th 12th में, तो बहुत सारा कुछ याद होता होगा इलेक्ट्रॉन्स करके. इन एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कुछ शक्ति देंगे तो एक ऑर्बिट छोड़ के दूसरा ऑर्बिट और ऐसे जा सकते. लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक गो इन द मिडिल, और वहां से वो आगे जाना है नहीं तो पीछे आना है, बीच में रहने से. तो स्वर्ग टिपिकली ऐसे है, हमको कुछ पुण्य काम करके वो पुण्य को कमा के हम स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन जैसे हमारा पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाता है हमको वहां से वापस आना पड़ेगा. जैसे कोई मान लीजिए हम फॉरेन कंट्रीज में टूर में गए, तो उसका अच्छा बैंक बैलेंस है नो, जो भी मान लीजिए आप $1 million उनका बैंक अकाउंट में लेके वो गया और बहुत मजा कर रहे वहां पे. मान लीजिए स्विट्जरलैंड गया, नहीं तो थाईलैंड गया, और आई थिंक रिसेंटली नो मीडिया में बहुत समथिंग व्हाट इज कॉल्ड मालदीव्स. तो मालदीव्स गया, बहुत दिन रुका है, लेकिन जैसे उनका पैसा खत्म हो जाता है उसको वापस आना ही पड़ेगा. अभी हम वहां पे बोल नहीं सकते बिकॉज दैट वीसा इज देयर, वी आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर country, so we have to come back to our. So in the same way heavens is a place जहाँ पे हमारा पुण्य जब खत्म होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, हमको जैसे हमारा पुण्य स्वर्ग में खत्म हो जाते हैं उसको वहां से हमको वापस ये पृथ्वी में आना ही पड़ेगा. so इसलिए पृथ्वी में जन्म मिलना बहुत फॉर्चुनेट, मतलब इट इज कंसिडर्ड वेरी फॉर्चुनेट थिंग. भाई इट इज समथिंग लाइक, मान लीजिए हमारा बड़ा अपार्टमेंट है, वह अपार्टमेंट में कितना स्टोरीज है, 14 स्टोरी अपार्टमेंट है, और वो 14 स्टोरी अपार्टमेंट में
Prithvi or this 14 planetary system in which the earthly planet is considered ground floor and heavenly planets are above the ground floor, no, G1, G2, G3, G4, whatever. And then below the ground floor, which are in the, what do you call this? I don't know what the term is which we use. Below the earth level, there will be floors. Like that, there are remaining floors. The total number of floors is 14. बट अगर हम बिल्डिंग से बाहर आना चाहते हैं, कैसे आएंगे हम? ग्राउंड फ्लोर में आके बाहर निकलना है. जैसे दुनिया में 14 प्लानिटरी सिस्टम्स है, लेकिन ये 14 प्लानिटरी सिस्टम से अगर हमको बाहर निकलना है, उसका रास्ता खाली पृथ्वी से. Of course, exceptionally, it may happen that there will be some great souls who will go to heavenly planets or somewhere in between, and then वहां पे उसका कोई शुद्ध भक्त का सांगत लेके, वहां पे शुद्ध भक्त का सांगत लेके वहां से वहां पे सीधा आध्यात्मिक नो दुनिया में जा सकते. They may go to Vaikuntha, they may get impersonal liberation also. But in general, बाहर जाने का रास्ता कहाँ से मिलता है? ग्राउंड फ्लोर से मिलता है. The same way, even though one may go to heavenly planets, one has to ultimately come to earthly planets. Even someone going to Naraka, नरक जाने में भी that is also a temporary place. वहां से भी आदमी को वापस पृथ्वी में आना ही पड़ेगा. तो बाहर निकलना है यहाँ से तो एक ही रास्ता है, हम पृथ्वी में आके भक्ति करने. और वही चीज देखिए 9.39 में कृष्णा इज फुल्ली 39 9.34 Krishna is clearly giving the conclusion. Manmanavo madbhakto madhya manskaru mamye vaishyakamte atmanam matparayana. Krishna is telling, ultimately one has to do manmanavo madbhakto. One has to perform bhakti, thinking of Krishna. So actually Krishna is very accommodating in that sense. He's telling, soon after this he says that, अच्छा अगर कोई सोचेगा everything is Krishna only, then what is the problem? I can go to heavenly planets also. I can do karma kandi also. I can do some yoga also, mystic yoga props also, or I can do bhakti also. Whichever I want, I can do. So which is very liked by me? कर्म कांड. भाई कर्म कांड में क्या होता है? मुझे थोड़ा कुछ तकलीफ है, कुछ विधि करना है, कुछ पूजा करना है, कुछ व्रत करना है. व्रत करने के बाद हमको कहाँ जाएंगे? हेवनली प्लैनेट्स में चले जाएंगे. वहां पे वो ये सब करने से हमको पुण्य मिलता है. पुण्य 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 को कमा के हम स्वर्ग में चले जाएंगे. और स्वर्ग में हम क्या करेंगे? इंद्र तृप्ति करेंगे. अरे क्योंकि इंद्र तृप्ति जो यहाँ पे ये दुनिया में करते हैं उसका पाप लगेगा, लेकिन वही चीज स्वर्ग में ऑफिशियली अलाउड है. तो वहां पे हम ऑफकोर्स स्वर्ग का इंद्र तृप्ति अलग लेवल पे होता है, दैट वी कांट कॉम्प्रहेंड. बट द पॉइंट इज दैट वन में थिंक इट्स वेरी नाइस, थोड़ा तकलीफ ले लेंगे, अभी थोड़ा पुण्य कर लेंगे, कोई कर्मकांड कर लेंगे, हम चल जाएंगे स्वर्ग पे और स्वर्ग पे अच्छे से भोग करेंगे. नो, इट्स अ प्रॉब्लम. कितना समय तक करेगा? जब तक हमारे अकाउंट में पैसा है, आई मीन हमारे अकाउंट में पुण्य है, उसी समय तक रह सकते हैं. दैट्स व्हाट इज टोल्ड इन दिस श्लोका. What the sloka says, when they thus enjoyed vast heavenly sense pleasures and the result of their pious activities are exhausted, they return to this mortal plane again. Those who seek the sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. मतलब जो वेद में शास्त्र के अनुसार अलग अलग रीति रिवाज करेगा, जो त्रिगुणों का नीचे में है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का, it is that those activities are under the three modes of material nature, they are again subject to cycle of birth and death. Because if someone wants to go to transcendental platform, they have to go beyond the three modes of material nature. Whereas the Vedavada Vatarthartha, the ritualistic ceremonies which are mentioned in the Vedas, they are like flowery language. Flowery language means
अच्छा सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे हमको कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो काम करने से हमको वापस स्वर्ग में जाना पड़ेगा। स्वर्ग में वापस हमारा अकाउंट खाली होने के बाद हमको वापस एक बुद्धि में आना ही पड़ेगा, which is again cycle of birth and that's why a intelligent person will say, अरे आप मुझे बोलते हैं इतना कर्मकांड का काम करने के लिए, इतना यज्ञ करने के लिए, इतना व्रत करने के लिए, इतना क्या अलग अलग प्रक्रिया करने के लिए, लेकिन ये सब करने से क्या फायदा है? क्योंकि ये सब इतने बहुत मेहनत जा रहे हैं, वो सब मेहनत जाने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? थोड़ा इंद्र तृप्ति मिल रहा है, वो लीगलाइज्ड इंद्र तृप्ति। कहाँ पे? स्वर्ग में। और उसको भोगने के बाद वापस इधर मुझे आना पड़ेगा, जहाँ पे अगेन आई हैव टू बी स्टक इन दिस साइकिल ऑफ। इसलिए शंकराचार्य बोलते हैं ना, पुनरप जननम पुनरप शयनम यशम सारे बहुत उपकारे कृपया पाहि पाहि मुरारे। So here Krishna is clearly telling the futility of engage oneself in karma kanda activity. Karma kanda activities means what? Doing some Vedic activities. They are part of the Vedic activities only, but doing it for the sake of experiencing sense enjoyment again, maybe in a very refined ambience, in a place like Swarga where sense enjoyment is very, वहां पे शरीर ऐसा है कि अच्छे से हम वो करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, जैसे हमको खाने का इच्छा होता है। अभी किसी का मान लीजिए पिज्जा खाने का बहुत इच्छा है, लेकिन नई दुनिया में हम कितना खा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक दो, दो भी बहुत मुश्किल से खाए। बड़ा पिज्जा है ना, 18 इंच का पिज्जा है तो यू कांट इवन ईट वन फुल पिज्जा। Whereas in heavenly planets one gets such a body where one can enjoy very nicely. Body is very susceptible for experiencing sense pleasure. But the problem is what? Again one has to come back to the material world, earthly planets. Again one will get the body, that current body that we have, which is not like very suitable for sense pleasures also. So that's why Shastra said, Krishna is telling, don't unfortunately get into this. अब फंसाओ मत इसमें एक कर्म कांडी एक्टिविटीज में आप फंसाओ। क्या करना है? एम फॉर ट्रांसेंडेंस। That's what Krishna is going to tell. Eventually is going to tell, यांति देव वर्ता देव। हाँ, आप ऐसे मत सोचिए सब चीज सेम है। पहले कृष्ण इज टेलिंग हियर, you know, one goes to heavenly planet, one goes to heavenly planets, and again he comes back, and then in that way he is again repeating the cycle of birth and death. Krishna is telling these things very clear. Now, so that time one may think that, okay, what is the issue? Krishna is only recommending this path. No. Krishna said, if you do this, it will happen, but ultimately, just go to 9.25. Krishna is very clearly making it clear that, array, if you want to go to heavenly planets, you will go to heavenly planets. Or if you worship Pitra Devatas, you will go to Pitraloka. Or if you worship me, you will come to me. Or if you want to even follow ghosts and this mode of tamogonic activities like this tantra, all that things, if you follow, then you will go there. So Krishna is making it very very clear. बाबा मैं आपको मल्टीपल पाथ्स बोल रहा हूँ, लेकिन जो पाथ आप लेगा उसके हिसाब से आपको ही रिजल्ट मिलेगा। In one sense, if you see, Krishna is acting like a perfect counselor. Our counselor should explain to the people who are under guidance, Prabhu or whatever, Mataji, if you do this, this will happen. If you do this, this will happen. If you do this thing, this will happen. Now counselor will, that person who is in the guidance will say, so Prabhuji, then what should I do? He said, you decide. So Krishna, that's what is clearly telling. But Krishna will again tell, see, such a beautiful way Krishna ends this chapter. Of course, when Krishna was telling Bhagavad Gita to Arjuna, he didn't say, and I am telling you chapter number 1. This is called this chapter.
And he didn't say, no, now this is chapter 12, that is Bhakti Yoga. He didn't say that. He was just telling a line. And then he makes it clear after the whole thing. He says that, though whatever activities you do according to service, still he specifically glorifies the path of bhakti towards him. What he's saying? Nantideva Varta. What he's saying that Manmanava Matto Madhya. No? And here also is very much, the first is telling, Patram Pusham Phalam Toim, no, whatever, just what I want is love. Somebody may say, actually, if you clearly see, path of karma kanda is very, very troublesome. One has to do a lot of hard work now to get into heavenly planets or all that stuff. Whereas path of bhakti is very simple. What Krishna is asking us is very simple. Patram, Pushpam, Phalam, Toyam, which anybody can give. Is it very costly to offer a flower to Krishna? Okay, now Mumbai, even flowers may be very costly. But is it difficult to offer water to Krishna? It's very easy because anyway we need water for us. So Krishna is making his expectations very, very ground. It's like, just offer me something with love and devotion. What is that something? It can be anything. It can be flower, it can be fruit, it can be anything. Or it can be water. Of course, it can be anything, doesn't mean that, prohibited acts. But no one is so poor that one cannot offer water to Krishna. Anybody can do it. Of course, sometimes some person may take advantage of this sloka and say that, Krishna is asking only patram, pushpam, phalam and toyam. Flower, leaf, fruit and water. So for Krishna, we'll give that. And then for ourselves, what we will do? We will eat chappan bhog. No. If we have capacity to offer chappan bhog, we should offer chappan bhog to Krishna. Or if we have capacity to offer very high opulence, then we should offer that high opulence to Krishna. That's how, that's what is the, but in any case, Krishna is making his expectations very simple. Then just offer me something with what? Bhaktya, with devotion. Now afterwards, Krishna thinks, maybe I'm asking too much. Though he's not asking too much, but he may feel, अरे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कृष्ण, क्या आपको इतना चाहिए? अच्छा ठीक है, कृष्ण बोलते कि अरे अगर आप उतना भी नहीं दे पाएंगे ना, just offer me some obeisances. You just whatever, yajhoshi tada cheta, see this 9.27. Yat karoshi, yadasnashi, yajhoshi, tadasyat. Said whatever you do, you offer them. अगर आपको लगता है कि पत्रम पुष्पम फलम तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप तो कुछ तो काम करेगा ना, वो काम मेरे लिए ऑफर. बस is making it very, very cheap. So that's what typically even in Vedic system also, in Vedic life also, life used to go like that. People are typically attached to do different karma kind activities like, some कुछ यज्ञ करने में, कुछ व्रत मतलब आप देखा होगा ना, घर पे कुछ व्रत व्रत कर, कार्तिक मास में ये व्रत करना है, मार्गशिर मास में लक्ष्मी जी का व्रत करना है. अभी कल परसों सूर्यदेव का कुछ, आई डोंट नो साउथ में होता है ऐसे, नॉर्थ में करते कि नहीं. साउथ में बोलते हैं रथ सप्तमी. रथ सप्तमी मतलब उस दिन सूर्य का उपासना करते हैं. अलग अलग चीज है. तो देखिए, ये सब चीज भले शास्त्रों में है, लेकिन उसका पर्पस हमको समझना चाहिए. और उसका पर्पस क्या है? मैं आपको कुछ चीज करता और वो चीज करने से मुझे कुछ फल चाहिए. Slightly you can say unauthorized business. Whereas Krishna, you want to, whereas bhakti is not a business. Bhakti means what? We do something so that our affection or our love and devotion offer to Krishna. Just like sometimes a small boy offers, he goes to the kitchen and then he helps his mother in cooking something, and then he makes small chapati, and then father comes to the home
No, the small kid goes to father and says that, "Papa, मैं आपके लिए आइस अच्छा छोटा रोटी बनाए." भले वो रोटी में जल जल गया होगा, तो बहुत छोटा होगा, लेकिन फिर भी तो पिताजी बहुत खुश हो जाए, because there's a lot of love and affection in it. The same way, if you offer anything with love and devotion to Krishna, Krishna takes it very nicely. And then Krishna becomes very happy. Oh, my dear devotee, after so many lifetimes, of struggling in this cycle of birth and death, he is coming to me, and then he's offering with lot of love and devotion. Now, he's ultimately come to, devotional path of devotional service, and then he's offering me with Krishna becomes very extremely happy. Even though what we are offering is very, very insignificant, but for Krishna, it makes him very happy. Whereas on the other hand, karma kind of activities is like, it's like Amazon delivery boy coming to home. He doesn't have any love for us. उनका काम है, आप जो ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से अमेजोन से, वो घर पे आके डिलीवर करके चले जाए, पर डिलीवरी करके चले गया, उसका और आपको कुछ लेना देना है ही नहीं. भले वो 20,000 रुपए का आपको डिलीवरी किया, 20,000 रुपए का मोबाइल, लेकिन यू डोंट फील मच लव विद दैट पर्सन, बिकॉज आपका पैसे से आपका हो गया, उनका काम से गया, इज नॉट डन आउट ऑफ लव. वेरएज घर पे लड़का अपना रोटी, मतलब जो आटा जो पिताजी का है, वो उन्हीं का आटा से कुछ बना के दे देगा, उसमें बहुत प्रेम का अनुभूति. So that is the difference between karma kanda. Even though 99% of the Vedas deal with karma kanda, it's fine. It is okay. I mean, instead of becoming atheist, नास्तिक बनने से ये कर्म कांड का काम करना बहुत अच्छा है, लेकिन जो भक्ति मार्ग में जो होता है, इट इज हाईएस्ट, बिकॉज जो भक्ति मार्ग में एक प्रेम का पद, कर्म कांड इट्स बिजनेस. ओके, आई डू दिस then I get this, I do this and I should get this. So that's what eventually Krishna concludes it. So he's telling in the current sloka, in the previous sloka he's telling about the how the karma kanda process works, and in this sloka Krishna is clearly telling, okay, to do karma kanda, you go up, and then after the punya is chine punya martilokum mission, once you may come back again. No, not you may come back, you will have to come back again after the punya account is finished. And then eventually you'll see Krishna is your and also. So much so that he's telling, no matter whatever you are doing, no issue, please offer it as offering to me. In that way, what will happen? Bhakti. The bhakti will develop. Of course, right now we may not have prema, we may not have that spontaneous attraction for Krishna, but just like, of course, this example may not be so much appealing now, but in maybe some 50, 60 years back, in India, the culture was such that mostly boys and girls were not, they would not talk to each other much as a student. So, but father and mother will make an arranged marriage, and then after they get married, wife starts serving husband, and then husband also starts serving wife by taking care of him, or by taking care of her in different ways. And then slowly through that service, eventually that very strong affection will be developed. The same way, right now we may not have a very spontaneous attraction for Krishna, but then slowly, like Krishna is telling, okay, at least offer something. Okay, at least chant Hare Krishna mantra, chant 1 round, or chant 4 rounds, chant 16 rounds. Okay, at least once in a week you try to come to it. Or like slowly hear Krishna Katha, hear Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad. In that way, slowly, when we do such activities, which is called Vaidhi Sadhana Bhakti. Vaidhi Sadhana Bhakti means the Bhakti Sadhana. Sadhana means practice.
Why sadhana bhakti means bhakti which needs to be practiced. Why the sadhana bhakti means the practice of devotion service as per the Vedic rules and regulations. This is called Vaidhi sadhana. So when we do Vaidhi sadhana bhakti, slowly, this spontaneous attraction for Krishna will be developed. Right now, it may not be there, but when you start serving, it will eventually come. Just like the wife may not have so much attraction for the husband initially, when she got married, but slowly, she starts serving, and then she understands him, and then he also understands her. And slowly, a very strong bond will be developed over a period of many years. That's what for current situation may be a little different. So the point. The same way, slowly we start serving Krishna. And on the other hand, uh, when we do karma kanda activities which are like business, okay, I will order this much money, and then this much payment I will do online payment or COD, cash on delivery, and then delivery boy will give the commodity. But then that's over. It's business. I ordered, and then it's your job to deliver. That's over. So karma kanda is okay. Hare Krishna. So anyone has things to share? Or What, Prabhuji? What I have to share? if anyone wants to share anything, okay. So Prabhuji, so we have one of the very important person, Nirja Mataji here, who is a main coordinator in this group. So Mataji's father expired last night. So if we can just have a quick chanting for the wonderful soul. Hare Krishna Mahamantra, Prabhuji. so we will do it in a japa way or kirtan. We can kirtan, yeah, we can do kirtan, Prabhuji. Quick 2 minutes kirtan, Prabhuji. Yes. So I'll just check it. I think I don't have kartal, so we'll just do with clapping of hands. Okay, yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Hare Rama, Ram, Rama. Ram Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. हाँ, माता जी. So, when we pray, the main attitude is that it's a attitude of gratitude. We have to- Because uh, when a person he or she has done a lot of service to us. So now, after the person departed, we offer our praise to Krishna for the spiritual well-being of the ahead journey of that particular entity. So, in fact, this is the best way to offer our gratitude towards a person. Let's say even in the Vedic times, they used to do Shraddha and other activities. The main purpose was they would offer the Vishnu Prasada to the departed soul. Of course, it was done in a various different, in a different ritual way. But even you see, they are singing Hare Krishna mantra with the idea that the departed soul will get the spiritual benefit or by in the form of Krishna's blessings for his or her person. Okay. Hare Krishna. So thank you so much, Prabhuji, for joining Thank you us so today. much, Prabhuji. We should loudly chant 3 times Hari Bol for Prabhuji for giving such a wonderful class and doing wonderful Kirtan for departed soul. Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol. Hari Bol. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Hare Krishna, Prabhuji. Thank Hare you. Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji.